Welcome for our today's discussion regarding accountancy. We have started chapter 5, accounting ratio. Obviously, it is under Part B syllabus as per CBSE. For accounting ratio chapter, it is our 7 number episode. Already we have discussed liquidity ratio, under which current ratio and liquid ratio were there. After that, solvency type of ratio we have started. Under solvency ratio, there are 4 types of ratios. One is debt equity ratio, second one is total assets to debt ratio, third one is proprietary ratio, fourth number is interest coverage ratio. So, under solvency ratio, we have started and discussed debt equity ratio in episode number 5 and episode number 6. There are 2 types of sums of debt equity ratio are there. That's why we have discussed 2 types of sums in the 5th and 6th episode regarding the debt equity ratio. Now, total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio, the formula is total assets by debt. Total assets means total of assets except fictitious asset. Now question is, main formula is this: total assets by debt. To remember the formula of this ratio is very easy, because the name of this ratio is total assets to debt ratio. total asset, debt, नीचे डेप्ट आ गया, तो टोटल एसेट्स बाय डेप्ट. ये फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर में कौन कौन सा आइटम टोटल एसेट्स में आएगा and which items will be under the debt, that is the main factor. Debt means, long term borrowings, and total assets, suppose in the question it is given plant and machinery 2 lakhs, land and building 1 lakh, goodwill 50,000, inventory, it is also asset, inventory 30,000, bills receivable or trade receivable suppose to 20,000, and PL account debit balance. Once you should keep in mind, PL account एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिव आइटम है स्टूडेंट के लिए. पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस. पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब ही है वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इज द आइटम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस इज द सर्वेडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी में आता है वो. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये आपका लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, और ये एसेट्स में आता है. सवाल ये है कि लॉस है फिर एसेट कैसे? लॉस है, ये एसेट इसलिए होता है क्योंकि इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस को मेकअप करना पड़ेगा बिजनेस को ये आइटम को एसेट्स के नजर में देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हैज टू रिकवर दिस. तो प्रॉफिट एंड लॉस, सपोज डेबिट बैलेंस 50,000, ये भी एसेट साइड में आता है. ये सब के सब ऑल आइटम्स व्हाट एवर आई हैव रिटन राइट नाउ ऑन द बोर्ड,
all are the types of assets, various types of assets. कहीं हम देखेंगे ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर ये तीन में से ये दोनों लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल हैं, तो गुडविल इंटेंजिबल है, इन्वेंटरी और बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट है, और प्लांट पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। लेकिन है सब एसेट्स, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय डेप्ट, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जितना एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिया गया, सपोज इट इज द क्वेश्चन में जितना एसेट का अमाउंट दिया गया सबको तुम ऐड कर लोगे और टोटल एसेट्स के जगह पे ये अमाउंट को बिठा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। बिकॉज इसीलिए आपको फॉर्मूला में हम लिख के दिखाए यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स का अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के। मतलब ये प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो है इसको छोड़ के, इसको ये फॉर्मूला के आधार पर इसको एसेट्स के हिसाब से नहीं ले सकते। It may be the queries of the students कि why it will not be considered as the asset in this formula, because it is the PL account debit balance, means it is the loss, it will not be converted into cash। ये 50,000 जो लॉस हो गया ये कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए एसेट्स का वैल्यूएशन में हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते। कम से कम कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इसको हम लोग एसेट्स के गिनती में नहीं ला सकते, इसीलिए इसको छोड़ के बाकी जितना एसेट्स है सब रिकवरेबल है, सब एसेट्स कैश में कन्वर्ट होने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी कंपनी सेल कर देगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग सेल करेगा, कैश में कन्वर्ट होगा, ऑल दिस एसेट्स आर कन्वर्टेबल। सो यहाँ तक का एसेट्स का वैल्यू कितना हो रहा है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, टोटल हो गया आपका 4 लाख। तो टोटल ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स में हम यहाँ पे 4 लाख लिख रहे हैं, जो एग्जाम्पल लिए हम उसके आधार पर। और डेप्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेप्ट, इसके बारे में आप पहले जो डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग डिस्कस किए थे 5th और 6th एपिसोड में, देयर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, हियर ऑल्सो डेप्ट मीन्स द लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है फिर से हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, जैसे डिवेंचर, जैसे बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन मीन्स सपोज डिवेंचर 3 लाख, बैंक लोन 1 लाख, मॉर्टगेज लोन 4 लाख। मॉर्टगेज लोन किसको बोलता है, कोई एसेट वगैरह गिरवी रख के अगर लोन लिया, कोई वैल्यूएबल एसेट्स, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, फैक्ट्री कोई गिरवी रख के अगर लोन लिया, कोई कार को गिरवी रख के लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड द मॉर्टगेज लोन। सो ऑल दिस आर द लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना हुआ टोटल 8 लाख, तो ये 8 लाख यहाँ पे लिखेंगे, काट के कितना हो रहा है 4/8, दैट इज 1:2, दैट इज 1:2। 1:2 is the result of total assets to debt ratio of the company on the basis of this information. अभी सवाल है यहाँ पे हम लिख के रखे अलग से सेपरेटली टू डिस्कस द फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स किसको किसको बोलता है, आई विल सेंड द फॉर माई ओन स्कूल हिंदी बालिका विद्यापीठ सिलीगुड़ी, आई एम टेलिंग दैट आई विल सेंड द सम 1 page note regarding this, there you will see in the DK Goel book is also available. Fictitious assets means the assets which the expense or loss
which will never be recoverable but will have the scope for profit in future is called fictitious assets. That is example number 1, preliminary expense. Preliminary expense किसको बोलता है? Suppose a company is going to start in the market newly. At that time, inauguration program is done by the company. Some extraordinary people, industrialist, big industrialist has come from outside. Some amount is expensed for that. At the preliminary stage, at the initial stage of the company, that is called the preliminary expense. But whatever amount is already incurred or already expensed regarding the preliminary stage, that amount will not be recoverable. But that expense to be done, due to that expense, mass information will be gone to the society, and maximum consumer can know regarding that company, and it will be coming in news, and that benefit will be gone to the company ultimately. So that's why it is the fictitious assets. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. लॉस हो गया है तो फिर ये लॉस कभी वापस नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा. लेकिन इस लॉस को सामना करते हुए फिर से कंपनी को आगे भी बढ़ना है ताकि आने वाले दिन में प्रॉफिट हो सके. इसलिए इसको भी फिक्टिशियस एसेट्स में लाते हैं. और भी आइटम है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रिलिमिनरी स्टेज में एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी का जो प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च इन द मार्केट, रिगार्डिंग दैट कंपनी नोबडी नोज. द कंपनी बहुत सारे खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, बहुत सारे मीडिया को, टेलीविजन से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर, हैंड बिल, होर्डिंग, बहुत सारे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉलोअप किया कंपनी. और स्टार्टिंग टाइम पे कंपनी का 10 लाख रुपीस एक्सपेंस हो गया एडवर्टाइजमेंट के लिए सपोज. तो 10 लाख रुपीस एडवर्टाइजमेंट हुआ खर्चा, लेकिन वो 10 लाख का जो खर्चा हुआ, जो एडवर्टाइजमेंट का फायदा आएगा, वो फायदा एक ही साल में खत्म नहीं होगा. इट मे बी दैट एक, जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको. एक छोटा बच्चा है सपोज, क्लास 3-4 में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, उसको जितना भी बोला जा रहा है वो नहीं पढ़ रहा है. उसको एक थप्पड़ मारा गया, एक थप्पड़ जैसे लगाया, वो 3 दिन ठीक से पढ़ा, फिर से जैसे का तैसे हो गया, फिर उसको एक थप्पड़ मारे तो 2 दिन ठीक से पढ़ा. तो एक थप्पड़ का इफेक्ट एक ही दिन में खत्म नहीं हो रहा है, एक थप्पड़ का इफेक्ट 3 दिन चल रहा है, एक थप्पड़ का इफेक्ट 2 दिन चल रहा है. So whatever advertisement expense is made for 10 lakh rupees in the first year of the company, but that expenses for 10 lakhs is not the expenses for only the 1 year, only the first year. That will be continued. Consistency है इसमें. इसीलिए ये डिपेंड करेगा, जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो सोचेगा. इट इज द मैटर ऑफ मैनेजमेंट टू थिंक अबाउट दिस, कि this 10 lakh rupees expenses regarding the advertisement will be continued for how many years. If the management will think about it will be continued, this advertisement will be effect or benefit will be coming within next 5 years. So 10 lakhs will be divided into the 5, divided by 5. So 10 lakh by 5, how much? 2 lakhs. First year 2 lakh rupees will be shown in the PL account debit side,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बट 8 लाख रुपीस जो एक्सपेंसेस बच गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से, 2 लाख रुपीस करंट ईयर में दिखाया गया पीएल अकाउंट का डेबिट में, लेकिन 8 लाख रुपीस द कंपनी शो करेगा कहां पे, फिक्टिशियस एसेट्स के हिसाब से एसेट साइड में शो करेगा, क्योंकि वो 8 लाख रुपीस खर्चा तो हो गया है बट उससे बेनिफिट मिलना बाकी है कंपनी को जो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, और जो मिलेगा दैट इज द एसेट, दैट्स बट वो 8 लाख रुपया कभी रिकवरेबल नहीं होगा, उसके चलते कुछ प्रॉफिट हो सकता है लेकिन 8 लाख रुपया कभी वापस नहीं आएगा। दैट्स व्हाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा हो चुका है, डिफर्ड मतलब बाद में, ये रेवेन्यू बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहे, तो ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। सो फिक्टिशियस एसेट्स कभी ये फॉर्मूला में नहीं आएगा। सो this much for the total assets to debt ratio in the 7th episode. You not much sum is given for the total assets to debt ratio. 1, 2, 3 sums are given. Suppose I think in the book with the proprietary ratio mix up करके दिया हुआ है किताब में, debt equity ratio, proprietary ratio, total assets to debt ratio. So proprietary ratio I will discuss in the next episode. And this episode from the total assets to debt ratio, इसका फॉर्मूला को देखो, इसके अंदर में जो आइटम्स आ रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आ रहे हैं, इसके अंदर में क्या आइटम आ रहे हैं, इसको देखो, समझो, पढ़ो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी रेशियो के बारे में। ओके, थैंक यू।